Hi everyone, welcome to my YouTube channel General Awareness। आज के वीडियो में हम EBITDA का एनालिसिस करेंगे। So before moving ahead, EBITDA stands on earning before interest, taxation, depreciation and amortizations। So what is EBITDA? EBITDA is an alternate measure of profitability to net income। अगर मैं इससे नॉन कैश डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एज वेल एज टैक्स एंड द डेट कॉस्ट जो कि डिपेंडेंट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, तो एबिटा आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी कैश प्रॉफिट अपने ऑपरेशन से कितना जनरेट किया है। तो एबिटा एक जो है वो एक नॉट अ मैट्रिक रिकॉग्नाइज अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। सो सम पब्लिक कंपनी जो वो रिपोर्ट जो एबिटा करती है इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअली, सो वो एडजस्टेड एबिटा रिपोर्ट करती है, लाइक एक्सक्लूडिंग जो एडिशनल कॉस्ट होता है सच एज स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन, जो इस जिसको हम स्टॉप भी कहते हैं। So EBITDA is a widely used measure of core corporate profitability. EBITDA is calculated by adding interest, taxation, depreciation, and amortization expense to net income. तो EBITDA formulas and calculation। अगर कोई कंपनी आपको अपने रिपोर्ट में EBITDA प्रेजेंट नहीं करती है तो इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम FY 2020 के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इन FY 20 में रेवेन्यू वाज 100। As you can see, revenue was 100, so cost of cox was 90 rupees, 80 rupees, I'm sorry, and the gross profit was 20. So accordingly depreciation was 5 rupees, selling and distribution and admin expenses was 2 rupees, and the interest was 3 rupees. So earning before taxes or profit before tax was 10 rupees. So taxes अगर मेरा टैक्स का रेट है 25%, तो tax was coming 2.5. So net earnings or profit after tax is coming 7.5 rupees. So how to calculate EBITDA? तो EBITDA is equal to PAT plus tax plus interest plus depreciation। So in this case में हमारा जो PAT है वो 7.5। ओके, इसमें मुझे ऐड करना है टैक्स, सो टैक्स 2.5, तो 7.5 प्लस 2.5 आपको हो गया 10। अगेन वी नीड टू ऐड इंटरेस्ट, जो कि हमने यहाँ पे जो भी हाईलाइट करके रखा है वो सारा आपको एबिटा कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐड करना है। तो 10 प्लस 3 इंटरेस्ट 13 प्लस 5 डेप्रीसिएशन, तो 13 5 18। सो you can see कि EBITDA is coming 18 rupees in terms of percentage, it is also 18% because कि our revenue is only 100, right? सो इसी तरह अगर 21 में अगर हम देखेंगे तो मेरा रेवेन्यू था 110 एंड द कॉक्स वाज 90 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज एंड द depreciation 4 rupees, selling and distribution and admin 1 rupees, and the interest was 2 rupees. तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कमिंग 13 रुपीज, टैक्स एट द रेट ऑफ 25% जो कि आ रहा है 3.25। सो नेट अर्निंग्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कमिंग 9.75। अगेन EBITDA वी नीड टू कैलकुलेट, तो EBITDA इक्वल टू पैट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इन दिस केस में पैट इज कमिंग 9.75 प्लस टैक्स 3.25 plus 2 rupees interest plus 4 rupees depreciation। If you will add 9.75 3.25 plus 2 plus 4, तो ये आएगा 19 rupees। So in terms of percentage it is coming 17.27 percentage। So you can see like FY 22 and the 23। सो इसको भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि EBITDA परसेंटेज इज कमिंग 18.33 एंड 13% इन FY 23। सो दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं।
सो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये मैं इसको बना रहा हूँ मार्च, एज ऑन 31st March 2023. So I am sorry, this is a profit and loss. So this will be for the year ended 31st March 2023. So sales was 100 rupees, expenses 50. So operating profit is coming 50 rupees. In terms of OPM percentage 50%, other income zero. So other income हमने यहाँ पे zero purposefully रखा है, इसको बाद में नीचे बताएंगे इसका क्या impact होगा. So interest is coming 10, depreciation 15, profit before tax PBT is coming 25. Okay, the tax at the rate of 30%, so 7.5 is coming. So net profit 25 minus 7.5 is coming 17.5. So net profit percentage 17.5%, and the EBITDA. So EBITDA we need to calculate. EBITDA equal to net profit plus tax plus depreciation plus interest is coming 15 rupees. How 15 rupees is coming? So net profit 17.5, as you can see here, 17.5 plus we need to add 7.5, again 15 rupees ka depreciation and the 10 rupees interest. If you will add all these whatever I have highlighted, so it is coming 50 rupees. So our EBITDA was 50 rupees. In terms of percentage, EBITDA is 50%. How 50% is coming? 50 rupees ka EBITDA or our sales was 100. So 50% is coming. So you can say कि operating profit is equal to EBITDA. So answer is no. In operating profit में we are not adding other income, right? Other income operate, while we are calculating other income we are not adding into our while we are calculating operating profit we are not adding other income. बट कि अगर मैं EBITDA कैलकुलेट कर रहा हूं तो अदर इनकम उसमें कंसीडर किया जा सकता है. अगर यहाँ पे अदर इनकम में कुछ रुपीज होता, फॉर एग्जांपल 5 रुपीज 10 रुपीज वॉट एवर, तो ये जो EBITDA रुपीज एंड द EBITDA परसेंटेज कमिंग ये आपका चेंज हो सकता था. So only differences is there between the operating profit and the EBITDA. So फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. सो ये हमारा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2023. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम साइड का बात कर लेते हैं. तो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100, अदर इनकम 5. ओके, द टोटल इनकम वाज 105. ओके, एक्सपेंस साइड में देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड द प्रोजेक्ट बाउट आउट 20 रुपीज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 30, changes in inventories of WIP and the finished goods. So opening stock minus closing stock, it is coming 10 rupees. So next expenses is employee benefit expenses 20 rupees, and the finance cost is 10 rupees, depreciation and amortization expense 5 rupees, and the other expenses is 15 rupees. So total expenses is coming 110 rupees. So profit or loss before tax 5 rupees is coming loss, because our total income is 105 and the total expenses is coming 110. So 5 rupees का loss is there. So tax expense 0, loss पे no tax. So profit or loss for the year minus 5 rupees. So EBITDA, how we will calculate the EBITDA? So EBITDA equal to net profit plus tax plus depreciation plus interest oblique finance cost. If interest or finance cost both are same, so in this case loss is there, so net profit is negative. So negative 5 plus taxes plus is coming 0. So minus 5 plus 0 plus depreciation and amortization 5 rupees plus finance cost 10 rupees. So it is coming 10 rupees. EBITDA is coming. In terms of percentage, it is coming 9.52%. How 9.52% is coming? Because our EBITDA is 10 rupees and the total income is 105. So I am calculating EBITDA percentage based on the total income instead of the revenue from operations. So next, this is a statement. So a Z company generates rupees 100 crore in revenue and incurs rupees 40 crore in cost of goods sold and another 20 crore in overhead. Depreciation and amortization expenses total to rupees 10 crore. Interest expenses is 5 crore. So living earning before taxes rupees 25 crore. Okay.
So with a 20% tax rate, net income equals to rupees 20 crore after rupees 5 crore in taxes is subtracted from the pre-tax income. So if depreciation, amortization, interest and the taxes are added back to the net income, then what will be the EBITDA? So आपको बताना है कि EBITDA क्या होगा. So आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करके फिर देख सकते हैं कि आपका आंसर इज मैचिंग और नॉट. ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि हमारा EBITDA क्या आ रहा है. सो रेवेन्यू 100, COGS 40, overhead 20, depreciation 10, interest 5. तो profit before tax 25, tax rate 20%, तो it is 5. तो net income is coming 20, EBITDA is coming 40. How? 20 plus 5 plus interest 5 plus 10 rupees का depreciation. If you will add 10 plus 5 15 plus tax rate 5 20 plus net income 20, so it is coming 40 EBITDA. In terms of percentage 40%. So ये था indirect EBITDA. So we can also calculate directly EBITDA based on this statement. So revenue was 100, COGS 40, okay, and the overhead again 20. तो EBITDA क्या है? अर्निंग फॉर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस. तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट किया था अपने टोटल रेवेन्यू से, नो नीड टू डिडक्ट फ्रॉम ये सेकेंड वाले एग्जांपल से. तो अगेन EBITDA is coming 40 rupees in terms of 40%. I hope this will help you. If any question, please let me in the comment box. I will be happy to answer your queries. So thanks for watching. Please like, subscribe and share.